type of evaluation on the basis of phase instruction. In the various phases of instruction, evaluation is integrated. The four types of evaluation are placement, formative, diagnostic, and summative. So let's see what is placement evaluation. The keyword which is used for placement assessment is entry behavior. It determines the knowledge and skills the student possesses, which are necessary at the beginning of instruction in a given subject area. Evaluation of entry behavior is done just before teaching starts. Like जैसे कि हम कोई एग्ज़ाम दे के जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में या किसी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे एंट्रेंस होता है पहले। तो एंट्रेंस जो होता है वो प्लेसमेंट एवोल्यूशन में आएगा। इवोल्यूशन ऑफ एंट्री बिहेवियर, तो उसे आप एंट्री बिहेवियर के नाम से कह सकते हो। ए टीचर शुड नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट. दिस हेल्प्स द टीचर ऑर्गेनाइज टीचिंग learning activities according to the previous knowledge of learners. Various entrance exams can also be conducted for the same purpose. This is also done to see the knowledge base of students, and a teacher can start discussion keeping that in view. Then second is formative evaluation. It is also known as internal evaluation. So formative evaluation is known as internal evaluation. It is done during the program. तो वो प्लेसमेंट एवोल्यूशन जो है वो एंट्री बिहेवियर है एंड बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम. फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम, during the program before its completion. It focuses on the process and is conducted more than once depending upon the length of the activities. This evaluation provides the student with feedback regarding his or her success or failure in attaining the instructional objectives. It also identifies the specific learning error that needs to be corrected. तो ये क्लासरूम में होता है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम होता है. टीचर को कोई अगर वो पढ़ा रहा है और जानना हो कि स्टूडेंट्स उसे कैसे समझ रहे हैं, तो वो जैसे क्लासरूम्स एग्जामिनेशन करता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, तो वो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में जाएगा और थोड़ा उसने एग्ज़ाम किया, फिर उसके रिलेटेड उसने क्या किया, फीडबैक दिया. जैसे कि मैं करवाती हूँ अपने बच्चों को एग्ज़ाम, तो वहाँ पे जब स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया उसके ऊपर मैंने उनसे लिखवाया, फिर एक पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर मैं उन्हें सिखाती हूँ कि हैंड राइटिंग ऐसा है, पॉइंट्स ऐसा है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सही नहीं है, तो वो हो गया फॉर्मेटिव. फॉर जैसे कि एग्जाम्पल, स्टूडेंट लर्न्स एंड स्कोर्स हाई ऑन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द टेस्ट बट फेल्स इन द एसे पार्ट एंड ही इज रेनफोर्स्ड टू exerts more effort in answering easy questions in the succeeding test. For a teacher, formative evaluation provides information for making instruction and remedies more effective. Formative evaluation is quite helpful in the early stage of development of a program, as it helps in improving the program. For example of formative evaluation are unit end test, monthly test, or quarterly test, etc. Now, third number is diagnostic evaluation. While the formative evaluation determines the extent to which student completes the learning targets, the diagnostic evaluation goes a step further and tries to provide an explanation for the possible cause for the problems in learning. Those diagnostic tests are more comprehensive and detailed. Diagnostic evaluation is done at any time in the program to pinpoint anything wrong in the program. This helps the teacher correct the problems immediately, therefore improving the course. देखो यहाँ पे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है आपका एंट्री बिहेवियर है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है आपका ड्यूरिंग द प्रोग्राम है, और आपका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन जो है की पॉइंट अगर हम देखें तो वो है कि एट एनी टाइम दिस हेल्प द टीचर द प्रॉब्लम इमीडिएटली, correct the problem immediately, therefore improving the course. Now the fourth is
समेटिव एवोल्यूशन, तो यहाँ पे आपका फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो है वो आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, इंटरनल एवोल्यूशन होगा, और समेटिव एवोल्यूशन जो है आपका एक्सटर्नल एवोल्यूशन होगा। तो एज द नेम इंडिकेट्स इट इज़ डन एट द एंड और completion of the course. It determines the extent to which the objectives of instruction have been achieved and is used for assessing course grades. Summative evaluation generally includes oral reports, project term papers, and teacher-made achievement test, and it shows how good or how satisfactory the student is in completing the objectives of the instructions. So here are some key points. After area of functions, types of evaluation and their functions. Like after instruction अगर हो तो summative evaluation to clarify the learners. During instruction हो तो diagnostic evaluation to solve learning difficulties. Formative evaluation to provide feedback on the teaching learning process and have mastery in content. And before instruction is placement evaluation to know entry behavior.